Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Komal. So today I'm gonna try out one Instagram viral hairstyle video. So जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था, I made a mess like चिड़िया का घोंसला. So if you're watching my videos regularly, then you know that I love to create hairstyle in which we don't have to use so much of hair tools like rubber bands or so much of pins. So yeah, this is like a comfort hairstyle for me. And if you're new to my channel, then please subscribe and press the notification bell on so आपको सारी नई वीडियोस की notification मिले. And you can also follow me on Instagram जहाँ पे मैं reels and videos share करती हूँ hairstyle के. So yeah, now let's get start the video. ओके सो फॉर दिस हेयर स्टाइल यू विल नीड 2 रबर बैंड्स. और पर्सनली मुझसे भी ये पहली बार में नहीं बना था, मैंने भी इसको 2-3 बार ट्राई किया तब जाके ये बना था. जो हो सकता है आपसे बन भी जाए. सो लेट्स ट्राई आउट. सो सबसे पहले हमें करनी है सेंटर पार्टीशन. सो हेयर को सेंटर से 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है एंड देन ब्रिंग इट टू द अप लाइक दिस. And I'm pulling out some hair to the front. Now secure the ponytail with the rubber band. जब आप इसकी लास्ट रैप करते हो, मतलब कि जब भी आप किसी की 2 या किसी की 3, तो मेरी यहाँ पे ये तीसरी ये लास्ट रैप है. सो यू हैव टू स्टॉप इट हाफ वे. ओके सो अब दूसरी साइड पे भी हमें सेम तरीके से इस तरह से बन बनाना है. अब इसमें जो ये होल क्रिएट हो रहा है उसके थ्रू इस बन को पास ऑन करना है. ओके सो अगर आपके बाल शॉर्ट है तो आपका बन इतना ही बनेगा, लेकिन मेरा अभी भी ये एंड पार्ट है तो मैं इसे एक टाई करूंगी, देन उसे पिन से सिक्योर करना है. So we are done with the hairstyle और मैंने earrings भी change कर ली. So let me know guys if you want me to try out something that you have seen on Instagram or anywhere else on social media. Just share the picture or video with me on my Instagram account. And if you don't know, I post really cool hairstyle videos there too. So just to follow me there. And if you like this video, then please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And I will see you soon in my next video. Till then, bye bye. Take care.